Hello students. So in this video we will discuss the time dependent Schrodinger equation in one dimension and in three dimension. Okay. So let's start from the energy equation. You all know that the total energy of a system, total energy of a particle is equals to, if E is the total energy, then this is equals to the sum of kinetic energy plus potential energy. So if kinetic energy denoted as T and potential energy is V, then total energy E is equals to T plus V. Okay, so if a particle is moving, then we all know that the wave is associated with that particle, and according to Schrodinger denote this wave function as psi x. If the particle is moving in x direction, then in one dimension the wave function of that particle is psi bracket re x. Okay, so let's multiply this wave function on both the sides of the equation. So this will become psi e into psi x is equals to T psi plus V psi, which is also the function of x. Then what is the kinetic energy of the particle? The kinetic energy is, if it is moving in x direction, the kinetic energy is half m vx square. So vx square बदल रे खाली भी आमे लिखु देबो कोन ना हाफ m v square. So आमे जदि m गोटे m को मल्टीप्लाई करबा एंड डिवाइड करबा साइमल्टेनियसली, so it can be written as m square into v square divided by 2m. Then what is mv? We all know that the m into v is the momentum of that particle, so this can be written as p square by 2m. जदियो इटा पूरा करेक्ट फॉर्म होची यार px square, if a particle is moving in x direction, this should be written as px square, but आमे को p only p square भी आमे लिखि परिबा. ओके, ako आमे लिखि परिबा e psi x बदल रे आमे को ओनली e psi x को ओनली psi रे भी डिनोट कर परिबा. e psi is equals to t psi plus v psi, where in place of t is the kinetic energy. We can write p square by 2m into psi plus v into psi. एटा को हम दे दबा इक्वेशन नंबर 1. ठीक अछि, तले हमको कोन डिटरमाइन करिवर अछि ना टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर इक्वेशन. ठीक अछि, तमे ऑलरेडी तार फॉर्म ता तुमको जाना अछि. टाइम इंडिपेंडेंट लास्ट लेक्चर रे हमें डिस्कशन करथिले. कोन से इक्वेशन ता 1 i h cross del psi over del x, sorry del t is equals to this much. जस्ट खाली मैं तुमको रिकॉल कर दूची इक्वेशन टा कौन. तो ये वीडियो रे हमें टोटल डिराइव करबा इक्वेशन टा केमती आसिला. ठीक अछि, तो एठू तमे जानि पड़थबो. देखो v psi ऑलरेडी v psi एग्जिस्ट एठी अछि, तो एटा तुम जानि पड़थबो एटा कोठ आसला ना ए टर्म नु आसला p square by 2m psi रू, एंड ए टर्म टा कोठ आसला ए टू आसला. तो एटा सब केमती हला हम ए वीडियो डिस्कशन करिबा. ठीक अछि, तो फर्स्ट लेट्स अज्यूम ए वेव फंक्शन. गोटे वेव फंक्शन हम अज्यूम करिबा जोटा कि गोटे प्लेन वेव इक्वेशन. सो फर्स्ट यू हैव राइट इट एज, let us consider a plane wave, general wave equation हम गोटे नबा psi which is equals to a into e to the power I kx minus omega t, where k is the wave vector associated with that particle, and this is equals to 2 pi divided by lambda. आ गोटे रिलेशन कौन अच्छी मोमेंटम आउ के भितर p is equals to h cross k.
where h is the Planck's constant. देखो इटा रिलेशन तुम आगु जानथि h टा होची Planck's constant, h over 2 pi होची h क्रॉस आगु कहंती एंड k केते हबो जदि p तुम जानछ डी ब्रोगली वेव इक्वेशन अनुसार p is equals to h by lambda. So if p is written as h cross k and h cross is equals to h by 2 pi, then what is the value of k here in terms of lambda? So k is equals to 2 pi by lambda. It was later ठीक अच्छे. So ये हम पाइले ना h by lambda. So p रो ये फॉर्म टा भी मन रखथिबो. एटा तो आगु जणा थला डी ब्रोगली वेव इक्वेशन and this can be written in terms of h cross and k. P is equals to h cross into k. Okay. Then here omega is the angular frequency. Angular frequency which is equals to 2 pi nu. You all know that E is equals to h nu. So तुमको कही थी कन्वर्ट कर कि E को इन टर्म्स ऑफ h क्रॉस एंड ओमेगा. सो केते हबो इज इक्वल्स टू h क्रॉस इनटू ओमेगा. केमती हला h होची h by 2 pi, h क्रॉस होची h by 2 pi and omega is 2 pi into nu. So 2 pi cancels out h nu. Okay, so E is equals to h cross omega. This is the another equation of the energy. So now put these two values in this psi. Okay, so we have to write psi in terms of p and e. Then केते हबो psi is equals to a into e to the power I. In place of k we can write p over h cross. So p divided by h cross into x minus in place of omega we can write e over h cross into t. So this will be a into e to the power I divided by h cross px minus et. This is the equation number 2. So now differentiate equation number 2 with respect to x and then multiply with minus kx. So we have to write here that differentiating psi which is equation 2 with respect to x and multiply minus IH cross. Okay, now del psi over del x is equals to कितना वो डिफरेंशिएट कर ले. दिस इज आई पी डिवाइड बाई एच क्रॉस इंटू ए इंटू ई टू द पावर जहाँ अच्छे से है पी एक्स माइनस ई टी. सो देन मल्टीप्लाई विथ माइनस आई एच क्रॉस. सो माइनस आई एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल एक्स इज इक्वल्स टू कितना माइनस आई एच क्रॉस इंटू आई पी बाई एच क्रॉस. ये टर्मटा केते दिस इज साई. सो साई इक्वल्स टू माइनस आई स्क्वायर आई इज इक्वल्स टू तुम जानते हो -1 रूट ओवर. सो आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 सॉरी -1. देन दिस इज माइनस देन आई स्क्वायर अगेन माइनस. सो माइनस माइनस प्लस and h cross cancels out. So this is only p psi. So from this equation we can write it as the operator. So as minus I h cross del psi over del x is equals to p into psi. So we can write at p the operator associated with the momentum is minus I h cross del over del x. सो स्क्रोडिंजर इक्वेशन सॉल्व कला बेले भी जानिले आ गोटे नुआ कथा कि
द ऑपरेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंटम केते हबो सो मोमेंटम रा मन रखियो माइनस आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स ऑपरेटर रिप्रेजेंटेशन of momentum. Okay, now we have to again differentiate this with respect to x and again multiply minus I h cross here. So differentiate कले केते आसीबो minus I h cross एटा को मु differentiate करिवि हला minus I h cross del square psi over del x square which is equals to एठी x term कोठी अछि p रे तो x term नाही psi रे x term अछि psi केते थिला हमरा I p over h cross so I p over h cross आसिला then आउटे ऑलरेडी p एठी एग्जिस्ट करछि सब p into psi so केते हबो I by h cross p square psi अछि तम डिफरेंशिएट करले एति मिलला देन मल्टीप्लाई यू हैव टू मल्टीप्लाई अगेन विथ माइनस I h cross ओके सो माइनस I h cross मल्टीप्लाई करले केते माइनस माइनस कैंसिल्स आउट I h cross गोटे आसीबो I स्क्वायर पळे आसीबो सो I स्क्वायर ता माइनस हि जिवो माइनस h cross रो स्क्वायर तुम एठी लिखिबो कि जहाँ जहाँ स्टेप करछो ता पूर्व लिखिबो कि अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन अकोर्डिंग ना भी तुम दे परिबो इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x एंड मल्टीप्लाइंग विथ माइनस I h cross ठीक अछि सो एग्जाम रे उडा सब लिखिबो सो माइनस h cross रो स्क्वायर del square psi over del x square is equals to minus I h cross एपटे मल्टीप्लाई करले माइनस h cross रो स्क्वायर हला एपटे मल्टीप्लाई करले केते हबा माइनस I h cross सो माइनस गोटे अछि h cross कैंसिल्स आउट हि जिवो सो I square is again minus so minus minus plus so this is equals to only p square psi एटा पाइबा then dividing both sides with 2m हमें डिवाइड करवा केते पाइबा माइनस h cross स्क्वायर बाय 2m del square psi by del x square is equals to p square by 2m into psi एटा हमें पाइला सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3 सो एबे देखो इटा हमर इक्वेशन नंबर 1 रु हमें पाइले केते फर्स्ट टर्म टा पाइ गेले p स्क्वायर बाय 2m into psi केते हबो p स्क्वायर बाय 2m psi हमें पाइले v psi भी कांस्टेंट अछि देन हमको एबे दरकार e into psi केते हबो तो हमें काम करबा देखो the next step is we have to differentiate the wave function with respect to t so differentiating psi with respect to wrt with respect to t and multiplying with एठी I h cross हमें मल्टीप्लाई करबा केते पाइबा तो वेवटा केते थिला a into e to the I kx minus omega t so del psi over del t केते हबो देखो एठी केते हबो नीचे करा केते हबो माइनस a into केते हबो माइनस I e by h cross into e to the power I over h cross px minus et खाली डिफरेंशिएट करली केते विथ रिस्पेक्ट टू t करली देन वी हैव टू मल्टीप्लाई I h cross on both the sides so I h cross del psi over del t is equals to
एटा केते एटा होची माइनस आई ई बाई एच क्रॉस इंटू साई सो आई एच क्रॉस मल्टीप्लाई कले केते आसीबो आई एच क्रॉस इंटू माइनस आई ई ओवर एच क्रॉस इंटू साई सो एच क्रॉस ये कैंसिल हो गला सो आई स्क्वायर माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन सो दिस इज ओनली ई इंटू साई सो ये तुम पाइल कि नहीं ई रो ऑपरेटर रिप्रेजेंटेशन ई को आम लिखिपर ये जमी मोमेंटम हम पाई माइनस आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स सेमती ई रो ऑपरेटर रिप्रेजेंटेशन ये के हम आई एच क्रॉस डेल बाय डेल टी ओके so this is the operator representation of energy total energy okay suppose this is the equation number 4 so now put these two equation in equation हमर जो फर्स्ट इक्वेशन थिला इक्वेशन नंबर 1 रे हमें बे पुट करबा ई साई रो वैल्यू हमें जानि गले देन p स्क्वायर बाय 2m साई रो वैल्यू भी हमें डिराइव करले so now put these two equation in equation number 1 so this will be I h cross del psi over del t it e psi थिला so which is equals to p square by 2m ram पाइले केते ना माइनस h cross to square by 2m del square psi by del x square plus v into psi so this is the time dependent Schrodinger equation in one dimension so just write it as this is the time dependent Schrodinger equation in one dimension 1D ओके एटा कंप्लीटली बुझीला कि नहीं सो वन डायमेंशन रे हमें केमती डिराइव करले फास्ट एनर्जी इक्वेशन नेले E is equals to T plus V टीटा हूँ काइनेटिक एनर्जी एंड पी इज द मोमेंटम एनर्जी जस्ट आम मल्टीप्लाई करदेली साई बोथ साइड रे साई मल्टीप्लाई करके आम गोटे वेव फंक्शन आज्यूम कले प्लेन वेव ताको आम डिफरेंशिएट करके कौन पाइले आम फास्ट पी स्क्वायर बाय 2m साई को तार ऑपरेटर रिप्रेजेंटेशन अनुसार डिराइव कले साई को डबल डिफरेंशिएट करी देन इवैल्यूएट ई साई आल्सो इन टर्म्स ऑफ टाइम इट्स in terms of its opposite representation which is IH cross del over del t then I put kale dita value ko just in equation 1 and from that we got the time dependent Schrodinger equation so ye jai bujhela ki nahi then let's derive the time dependent Schrodinger equation in 3D 3 dimension रे केते होची हमरो इक्वेशन टा ठीक अच्छे सो फॉर 3D किसी चेंज होबनी जस्ट तार जो वेव फंक्शन अच्छी से चेंज हो फॉर 3D आम आगु लिखुले साई एक्स एठी लिखा आम साई आर टी ताने कौन ना साई इज द फंक्शन ऑफ आर एंड टी ऑल्सो सो सेठी भी साई इज द फंक्शन ऑफ थिला केते ना टी एंड एक्स सो एठी आर माने कौन ना एंती लिखि परिबा साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट 3D ना तो तीनटा कोऑर्डिनेट ऊपर डिपेंड करूची साई रा वैल्यू ओके नाउ एटा केते थिला केते a into e to the power I k x minus omega t सो एठी चेंजेस कौन हम ए तो सेमती रहिबो ए e to the power I k x बदल रे
we have to write it as r minus omega t. Just eta khali change light 3 dimension. So this represents the plane wave propagating in the direction of k. Okay, so now we can write it as psi rt. R means this is just the function of x, y and z. Okay, this is equals to a into jemti ame derive kutle aku in terms of p and e, semti you can write it as e into e power I by h cross. एठी आसीबो केते पळे आसीबो p px x plus py y plus pz z. so एठी केते आस्तला ओनली px आस्तला. सो एठी तीनटा कोऑर्डिनेट आसीबो px plus py plus pz minus et. ओके, देखो एठी हमें फर्स्ट तरह तार p आउ e टर्म रे एक्सप्लेन करथिले साई को केते आस्तला I by h cross px minus et. तो इन 3 डायमेंशन रे केते आस्तला ना px x plus py y plus pz z minus et. ओके, सो सिमिलरली जेमती माने करथिला 1 डायमेंशन रे सेमती जदि एग्जाम रे पचरा हेतिबो 1 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, तो 1 डायमेंशन रे जेमती स्टेप बाय स्टेप करिबा कथा करिबो एंड 3 डायमेंशन रे जना थिबो केमती करा जे जस्ट यू कैन राइट इट एज. सो तार p रा ऑपरेटर रिप्रेजेंटेशन केते थिला ना माइनस i h क्रॉस del over del x. सो एठी केते हेबो हमें फर्स्ट सिमिल जे आज we derive in for 1 dimensional case, so we can derive for 3 dimension also. so just खाली लिखि दोची केते हेबो तार वैल्यू. so first derive with respect to x and then with respect to y and then with respect to z individually and multiplying with minus I h cross. so केते हेबा आंसर with respect to x कले minus I h cross del psi over del x is equals to px psi. so again deriving with differentiating with respect to x and multiplying with minus I h cross, then what is the answer? Answer is minus h cross square del square psi by del x square is equals to px square into psi. Suppose this is equation number a. Suppose this is equation number a. So here what is the operator for px? For px the operator is minus I h cross del over del x. Similarly do it by yourself. The operator representation of py and pz, just differentiate psi with respect to y and then multiply with minus I h cross, then again differentiate psi with respect to y and multiply with minus I h cross. So for first with respect to with respect to y minus I h cross del psi over del y. केमती पाइली मुझे डिफरेंशिएट करली psi को with respect to y and multiply करची minus I h cross. As we do it for the 1 dimensional case. So this is equals to py into y. So the operator representation of py is equals to minus I h cross del over del y. So again differentiating with respect to y to this equation, so and then multiply with minus I h cross. So एकत्र हम लिख दूची. So answer is minus h cross square del square psi by del y square, which is equals to, sorry, this is psi. So this is py square into psi. So this is equation number B. Okay. Similarly for z coordinate
this is minus h cross to square del square psi over del z square is equals to pz square into psi. So this is equation number C. So if you differentiate psi with respect to z and then multiply with minus ih cross, then we got the operator representation of pz which equals to minus ih cross del over del z. So just add these three equations A, B and C. केते हबो? So minus h cross to square can be taken as the common quantity and this is del square psi over del x square plus del square psi by del y square plus del square psi by del z square. So you have to write it here that adding equation A, B and C. Okay. So this is equals to px square plus py square plus pz square into psi. What is the value of this? So this is p square into psi. Okay. So now divide both the sides with 2m. So dividing with 2m on both the sides, we got that minus h cross to square by 2m del square psi by del x square plus del square psi by del y square plus del square psi divided by del z square, which is equals to p square by 2m into psi. So now then what is the quantity with this quantity? This is delta square. So we can write it as minus h cross to square by 2m del square psi is equals to p square by 2m into psi. Suppose this is equation number D. Okay. Now just आम जमी करथिले for one dimension, similarly for energy we have to differentiate with respect to t, differentiate psi with respect to t and multiply with ih cross. Equation one dimension case आम कौन करथिले differentiating psi with respect to t and multiplying with ih cross. So same things we have to do here. So what is the wave function? A into e to the power I k r minus omega t. So here if we differentiate psi, we have to differentiate this equation in terms of p and e. So differentiate psi with respect to t is del psi over del t is equals to, so time dependency e term रे अच्छी, so केते हबो एटा minus I e by h cross into psi. So just लिखुची एठी del psi over del t. You have to write first differentiating with respect to psi in terms of t and then just write this equation. So del psi over del t is equals to minus I e by h cross into psi, then multiply ih cross. So multiplying ih cross, so ih cross del psi over del t is equals to ih cross into minus I e over h cross into psi. So what is this? H cross cancels out, I square minus 1, I into I square minus 1 and this is minus.
so plus, so this is E psi. So this is equation number E. So एबे आमे पाइले E psi and p square by 2m into psi. Okay, so for 3D the total energy E is equals to p square by 2m plus v. Here the potential is dependent on r. In one dimension this v is only the function of x, but for 3D the potential is the function of both all the three values of x, y and z, which can be written as r only. Okay, and here the p square is px square plus py square plus pz square, and simply it is written as p square by 2m. Okay, so just put these all values of equation B and E in this equation. So first multiply psi on both sides. So E psi is equals to p square by 2m into psi plus v, which is the function of r, into psi. Then we have already the value of E psi and p square by 2m into psi from equation D and E. So put the value here. So this is I h cross del psi over del t is equals to from equation E. Then p square by 2m into psi, from equation D we can write minus h cross square by 2m del square psi plus v r को मैं लिख परिबा x, y and z into psi. Okay, so we can write I h cross del psi over del t is equals to del square plus v whole into psi. Okay, so this is the time dependent Schrodinger equation for 3 dimension. Okay, so at the end you can write, so this is the time dependent Schrodinger equation in 3 dimension. Okay, बुझेला 1 dimension रे जेमती डिराइव हुए 1 dimension रे सेम प्रोसीजर रे 3 dimension रे डिराइव हुए. ओनली चेंजेस कौन हम ना द वेव फंक्शन. 1 dimension रे मैंने इतला केते p into x, इठी instead of px only we write just p into r, which is pxx plus pyy plus pzz. हम सेम प्रोसीजर जमती 1 dimension रे बाहर करथिला सेम प्रोसीजर रे 3 dimension रे भी बाहर करबा. किछि कष्ट एथरा नै. ठीक अछि, तो जते प्रैक्टिस करबो सेते इजीली डिराइव कर परिबो तमे ए दुटा इक्वेशन 1 dimension टू 3 dimension. मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन ता एग्जाम रे आसे. सो बेसी नाही 3-4 थरा ताको प्रैक्टिस करले तुमको इजीली एटा तमे कर परिबो. एंड जोडा स्टेप मु लिखिनी एठी जो स्टेपटा करूथबो ता पूर्वरु सेटा लिखि दोथबो कि एटा में करलु. जेमते एठी लिखली मु डिफरेंशिएटिंग साइज टू t. सिमिलरली एठी तमे लिखिबो कि हियर इन मल्टी ब्रैकेट रे भी लिख परिबो एठी मल्टीप्लाइंग I h cross on both sides. Okay, तो लिखिकी गोटे गोटे स्टेप लिखिबो, देन से स्टेप को करिवो. Okay, so in the next class we will discuss the time independent Schrodinger equation and discuss some of the application of the Schrodinger equation. Okay, so let's stop the video here.